Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today we will discuss chapter number 12, Lines and Angles. आज की क्लास में हमने लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर के अंदर परपेंडिकुलर लाइंस डिस्कस करनी है. ठीक है. परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, डेफिनेशन है, टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ़ द एंगल बिटवीन दैम इज़ अ राइट एंगल और 90 डिग्री. दो लाइंस उस वक्त परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगी जब वो दोनों आपस में जब टकराएं, तो उनके दरमियान जब टकराएं तो एंगल, जब दो लाइंस आपस में टकराती हैं तो एंगल फॉर्म होता है. तो जो एंगल बने वो 90 डिग्री का बने, एग्जैक्टली 90 डिग्री का. ठीक है. और 90 डिग्री के एंगल को ही हम राइट एंगल भी कहते हैं. ठीक है. तो अगर वहाँ दो लाइंस आपस में टकराएं और उनके दरमियान जो एंगल बने वो 90 डिग्री या राइट एंगल बने, तो इस सूरत में ये लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगी. इसकी कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये सेट स्क्वायर है. इस डायग्राम को, इस स्केल को सेट स्क्वायर कहते हैं. ठीक है. तो इसके देखें आप, कॉर्नर में राइट एंगल बन रहा है. ठीक है. यहाँ पर जब 3 बज रहे हैं तो भी राइट एंगल बन रहा है, और यहाँ पर आपके पास बोर्ड के जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पर भी राइट एंगल बन रहा है. आपको नज़र आ रहा होगा. तो ये लाइंस आपस में क्या कहलाएंगी? पैरेलल परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगी. ठीक है. ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि परपेंडिकुलर लाइंस की हैं. दो लाइंस आपस में टकरा रही हैं और आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है जब दो लाइंस आपस में टकरा रही हैं. यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और जाहिर है कि जब एक साइड पर 90 डिग्री बन रहा है तो उसकी दूसरी साइड पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा. ठीक है. इस वाले डायग्राम में भी आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. ठीक है. ये ज़रूरी नहीं है कि जो 90 डिग्री की जो लाइन बन रही है, ठीक है, एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर लाइन जो बन रही है, उसके लिए सीधी डायग्राम हो या हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, टिल्ट डायग्राम होगी तब भी 90 डिग्री का एंगल बन सकता है. ठीक है. जैसे कि यहाँ पर है. ठीक है. ये आपके पास देखें चारों तरफ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है. ठीक है. तो ये कहलाती हैं परपेंडिकुलर लाइंस. Hi students, today we're going to learn how to draw perpendicular lines, and the stuff that you need to start drawing would be two rulers, one ruler, a normal ruler, and the second ruler, a set square. Okay, I know the name is weird. A set square is this triangular ruler that you need. Okay, I will show you how to draw a perpendicular line. If you do not have this ruler, it is also fine to use two normal rulers. Yes, but first let me show you with this set square ruler. Okay, so perpendicular lines. If they have already given you a line and they ask you to draw a line that is perpendicular to the line that they gave you, then all you need is to get your set square and put it on AB. Okay, now it's very important that you put it exactly. Okay, if your ruler is a bit slanted, it will not work. We need a 90 degrees there. Yes, perpendicular lines are lines that meet at 90 degrees. Okay, so once I have put my ruler straight on AB, I can draw a perpendicular line because it hits at 90 degrees. Now, how many perpendicular lines are there? There are so many perpendicular lines. Look, anywhere that I put my set square, there is another perpendicular line. Another perpendicular line. There are so many perpendicular lines. Okay, so for example, if I'm talking about this one, I'm going to name it X, Y. Okay, and how do we write it down? We're going to write AB is perpendicular, okay, note the symbol, to X, Y. AB is a line, this line, and XY is a line, this line. So this pair, which is two of them, they always come in twos, yeah? These two lines are perpendicular. They come in pairs. You cannot say that AB is perpendicular. You need to always tell me AB is perpendicular to another line, which is XY. Now, what happens if nothing is given and they ask you to draw two perpendicular lines? Now, we always have to start with a line. So here's what I'm going to do. I'm going to draw a perpendicular line. Yes. And for those of you who have the set square, you can just put it there on the line, yeah, and draw a perpendicular line.
Okay, for those of you who do not have a set square, here's how you are going to do it with two rulers. You put one ruler on the line that you have and use your second ruler and make sure it is sitting flat on the first ruler. If you see here, then you'll be able to slide it. Yes, and it is a 90 degrees also. Now, some rulers have a curve like this. Okay, I advise you not to use this side. This one, I'm going to use this side of the ruler. Okay, I'm going to draw there. And if you take it away, you will see that this is also a 90 degrees. So you can also do it with a normal ruler, but you just have to make sure your ruler is not slanted. Okay, it needs to be exactly straight on the ruler that you put on the first line. And these are perpendicular lines. Let me name this. If this first line that I drew is PQ, and this line is JK, then I can write, it doesn't matter if you say JK or KJ, it's the same line. So I'm going to try KJ is perpendicular to PQ. And that's how you draw perpendicular lines. Remember, perpendicular lines meet at right angles. जी, तो अब बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। परपेंडिकुलर लाइन आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होती हैं और उन्हें कैसे ड्रॉ किया जाता है। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं, ऐसी दो लाइंस जिनके दरमियान का डिस्टेंस, यानी उनके दो लाइंस अगर मैं ड्रॉ करूँ एक साथ ऑन अ सेम प्लेन, इफ़ आई ड्रॉ टू लाइंस ऑन द सेम प्लेन, ठीक है, और उनके दरमियान का डिस्टेंस जो है, यानी कि उनके दरमियान में जो बीच में गैप है वो सेम रहे, एक भी इंच या एक भी सेंटीमीटर ज़्यादा या कम ना हो, ठीक है, और वो दो लाइंस आपस में कभी भी ना टकराएं, सही है, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, देन वो दोनों लाइंस क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। जैसे कि रेल की पटरी है, इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है, गैप है, वो एग्जैक्टली सेम रहता है हमेशा, ना कभी ज़्यादा होता है ना कभी कम होता है। अगर ज़्यादा होगा तो ट्रेन पटरी से उतर जाएगी, और अगर कम होगा तो ट्रेन पटरी से गिर जाएगी, ठीक है। इसीलिए और ये डिस्टेंस, ये लाइन, ये जो ट्रेन की पटरियाँ हैं, ठीक है, ये हमेशा पैरेलल लाइंस की सूरत में ही बनाई जाती हैं, ठीक है, ताकि जो है आपका जो इनके दरमियान का जो गैप है वो कभी भी कम या ज़्यादा ना हो और ये दोनों आपस में कभी भी नहीं टकराती। बिल्कुल इसी तरह से जो रोड के ऊपर येलो मार्किंग है, इसे भी पैरेलल लाइन की एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ किया जाता है रियल लाइफ के अंदर, और इसे बनाया जाता है। ये भी पैरेलल लाइन की एक एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पैरेलल लाइन की, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक स्क्वायर की बात हो रही है, तो स्क्वायर के अंदर ये जो दो लाइंस हैं ये आपस में पैरेलल हैं, और इसके अलावा ये जो दो लाइंस हैं, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। बिल्कुल इसी तरह से पैरेललोग्राम में ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से रेक्टेंगल में ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, जबकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। ना इनके दरमियान का डिस्टेंस कभी कम होगा और ना ये आपस में कभी टकराएंगी, ठीक है। इसके अलावा ट्रेपीजियम में, ट्रेपेजॉइड में, ये वाली जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है, लेकिन ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल नहीं है, ठीक है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल नहीं है। देखें इनका डिस्टेंस कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता और आखिरकार ये जाकर आपस में टकरा जाएंगी, ठीक है। तो जब चूंकि ये आपस में जाके टकरा जाएंगी, इसलिए इन दोनों का डिस्टेंस आपस में जाके कम हो रहा है, इसलिए ये पैरेलल लाइंस नहीं कहलाएंगी, ठीक है। बाकी नीचे एक दो एग्जांपल्स और दी हुई हैं, ए बी और सी डी, ये दोनों लाइंस आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। ना ही इनके दरमियान का डिस्टेंस कभी कम या ज़्यादा होगा और ना ही ये आपस में कभी टकराएंगी। Hi guys, today we're going to be talking about drawing parallel lines. Okay, I'm going to draw one using a set square and a ruler, and another one if you do not have a set square. So first, let us talk about what are parallel lines. Parallel lines are lines that never meet. Now, parallel lines are lines that go on and on and on and on, and they never ever intersect or meet each other. So let's say I want to draw a line that is parallel to AB. Now what I need is I need a set square, which looks like a triangle, but it's called set square, and a normal ruler. Now a set square is special because it has a right angle at one of the corners. Okay, so here's how I'm going to start. To draw a parallel line to AB, I'm first going to put my set square on the line AB. Okay, I'm going to put it exactly on the line AB. After that, I'm going to take my normal ruler, okay, and then I'm going to put it
on one of the sides of the set square, okay? And I'm going to hold it down so that it doesn't move, okay? Now the only one that moves would be this set square, which was initially on AB, okay? Can you see it is on AB? And then I'm going to slide it on the slider, slide it down. Okay, now I'm going to, once I have found my parallel, I'm going to hold it down, hold the set square down, let go my slider, and then draw the parallel line. Okay, now let me name this parallel line CD. Okay, CD. Now to show that they are parallel, I'm going to put an arrow, and let me write it out. AB is parallel. Okay, that's how we write the word is parallel to CD. Okay, now let's move on to PQ. If we do not have a set square, we can always use two rulers. Okay, so here's what I'm going to do. I'm going to use one of my rulers as my set square, and I'm going to put it on the line itself here. Okay, next I'm going to put my second ruler flat on this end of the ruler. Now it has to be flat, it cannot be slanted this way or that way because it needs to move. Now it's very important to hold your second ruler, this ruler, down firmly so that when you slide, it does not move. Okay, I repeat. First you put your ruler that is supposed to be the set square there. You put your slider flat on the first ruler, and then you are going to hold it down, hold this one down, and then you are going to slide this so that every line here is going to be a parallel line. Okay, so I'm going to choose where I want it to be. Okay, once you have chosen, I want the line to be here, I'm going to let go of my slider and draw the line. Now, as you draw, it's very important to hold your ruler down firmly. If not, as you draw, the ruler is going to turn and your line, it will not be straight, will not be parallel. So I may name this XY, okay? Because I want to show that they are parallel, I'm going to put a double arrow. Now I'm using a double arrow, not a single arrow, because I have these parallel lines on the same page. Okay, if I draw single arrow, single arrow, single arrow, single arrow, that will show me that that means these four are parallel, which is not the case. So to show that this pair and this pair are two different pairs of parallel lines, I have used the different number of arrows. Okay, and so how do I write it down? I'm going to write PQ is parallel to XY. So that's drawing parallel lines for you. Okay, be sure to hold your rulers down tight and firm before you slide or before you draw. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क ये है कि आपने चैप्टर नंबर 12 जो है उसका टाइटल पेज बनाना है, लाइंस एंड एंगल्स। इसके अलावा जो हमने आज पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस पढ़ी हैं, इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है विद देयर एग्जांपल्स। जो रियल लाइफ वाली डायग्राम है वो आपने नहीं बनानी, लेकिन जो नेक्स्ट पेज के ऊपर मैंने आपको कुछ डायग्राम्स दिखाई हैं जो कि पैरेलल लाइन की एग्जांपल्स को डिनोट कर रही हैं, वो आपने ज़रूर कॉपी में बनानी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। जज़ाकल्लाह। क्लास अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।